नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारी आज की संध्या में। इतने सारे अनूठे संस्मरण हमारे सबके जीवन में जुड़ रहे हैं इस रूप में, जहां दुनिया के इतने सारे देशों के कलाकार हमारी इसी धरा से उपजे सांस्कृतिक मूल्यों की इतनी सुंदर अभिव्यक्ति इस मंच पर कर रहे हैं इस रामायण महोत्सव में। आप जानते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से इसकी शुरुआत हुई थी। फिलीपींस के कलाकारों के दल के साथ एक बहुत बड़ा दल यहाँ आया हुआ है जो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके समक्ष आज की संध्या में रखेगा। दरअसल भारत सरकार ने जो स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की थी, लगभग 2 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें थीम बेस्ड अलग अलग सर्किट्स के निर्माण का प्रयास पूरे देश में किया गया ताकि हम देश को बेहतर तरीके से जाने भी और देश में पर्यटन को बढ़ावा भी मिले, क्योंकि पर्यटन में इतनी अपार संभावनाएं हैं जो आर्थिक प्रगति को एक नई गति देता है। रोजगार से लेकर तमाम तरह के अलग अलग उसके आयाम हैं टूरिज्म के, पर्यटन के। और इसीलिए भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जब ये सर्किट्स के निर्माण की और उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हुई, उसमें रामायण सर्किट एक बहुत महत्वपूर्ण सर्किट के रूप में उभर कर आया। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि महाराष्ट्र के 2 महत्वपूर्ण स्थल जो कि रामायण में जिनके बहुत महत्व भरा स्थान है, जिसमें नासिक है, पंचवटी यानी अरण्य कांड पूरे का पूरा जो है रामायण का उसी स्थल पर केंद्रित है, और इसी तरह से नागपुर का क्षेत्र। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात थी महाराष्ट्र के लिए, और इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने माननीय पर्यटन मंत्री महोदय के एक परिकल्पना के अनुरूप एक सुंदर निर्णय लिया ताकि मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की उसकी शुरुआत हो। और ये रामायण के माध्यम से इस देश के ही नहीं बल्कि इस देश के बाहर भी जो भारतीय संस्कृति का विस्तार है, उस विस्तार को अनुभव करने का, देखने का अवसर हम सबको मिल रहा है। और आज की संध्या में हम सबके बीच यहाँ हम सबके माननीय मंत्री महाराष्ट्र सरकार जय कुमार रावल जी की गरिमामयी उपस्थिति है। एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्हीं की परिकल्पना का साकार स्वरूप ये रामायण महोत्सव है। इस अवसर पर हम सबके बीच सचिव पर्यटन महाराष्ट्र विनीता वेद सिंगल जी, दिलीप गावड़े जी डायरेक्टर टूरिज्म, यहाँ पर मिसेस मॉली पॉल जो कि प्रिंसिपल ऑफ बॉम्बे स्कॉटिश, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। श्री आनंद नीलकंठन जी, उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा अभिमन्यु काली जी से, हमारे एमडी साहब से, कि वे माननीय मंत्री जी को लेकर मंच पर आएँ और साथ ही इन सभी से यानी विनीता जी से, दिलीप गावड़े जी, मिसेस मॉली पॉल और आनंद नीलकंठन जी, इन सब से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी एक बार मंच पर अवश्य आएँ ताकि आपके करकमलों से मंच पर दीप प्रज्वलित हो सके। और आज की संध्या की शुरुआत जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, उस संध्या की शुरुआत, उसका शुभारंभ आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में यहाँ इस मंच पर हो सके। तो एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री महोदय का। और ये अवसर आज की संध्या का, जब दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम आज की संध्या की शुरुआत करेंगे, दरअसल ये परंपरा है और परंपरा भी बहुत सुंदर अनूठी है, क्योंकि ये प्रतीक है इस बात का। आप जानते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी घना गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी लो भी उस घने से घने अंधेरे को चीर सकती है। ये आलोक की, ये रोशनी और प्रकाश की ये ताकत होती है। और प्रकाश हम सब के अंतर्मन में जहाँ से मिलता है वो हमारे रामायण जैसे महाकाव्य या हमारी संस्कृति है। तो मैं निवेदन करूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन सभी विभूतियों से निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। मिस्टर स्टीवन फर्नांडिस इज ऑल्सो हियर, वो इज आर्ट डायरेक्टर ऑफ ईपैग यानी इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड फिलीपींस। ही इज ऑल्सो विद अस ऑन दिस ओकेजन। वी वेलकम हिम ऑल्सो and he will accompany the dignitaries in lamp lighting too. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
बहुत बहुत आभार इन सभी विभूतियों का। निवेदन करूंगा सभी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। और मैं निवेदन करूंगा अभिमन्यु काले जी से, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल, वे आएँ और आप सभी का स्वागत करें, माननीय मंत्री महोदय का और आप सभी का आज की संध्या में। अभिमन्यु काले जी। आजच्या या आंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सवासाठी आपण सर्वजण जमलेलो आहोत. मला सांगायला खूप आनंद होतो आहे की आज आपल्यासमोर फिलिपिन्स या देशातील कलाकार त्यांची कला सादर करणार आहेत. भारतीय रामायणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे आपण पाहिलं गेलं 3 दिवस की जगातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये देखील रामायणातील मूळ नीतितत्व जी आहेत त्या नीतितत्वांचं अगदी कसोटीने पालन प्रत्येक देशांमध्ये करून त्याच प्रकारचा संदेश दिला जात आहे. मला हे सगळ्यांना सांगायला आनंद वाटतो की फिलिपिन्स हा प्रचंड मोठा देश आहे. फिलिपिन्स या देशामध्ये 7,600पेक्षा जास्त बेटं आहेत आणि इतक्या मोठ्या 7,600 बेटांमध्ये 19 प्रकारच्या वेगवेगळ्या भाषा त्यांच्यामध्ये बोलल्या जातात. डिसूजा से आय एम व्हेरी हॅपी दॅट फिलिपिन्स इज organizing this type of Ramayan festivals everywhere. I know that you are organizing in Philippines also. So in your country you speak 19 official languages as well as there are so many dialects, and we are very happy that in these all languages Ramayana is the foremost play, and so I am very happy that Philippines is going to perform today, as well as I am very happy. इसी के साथ में आज हमारे साथ बॉम्बे स्कॉटिश की प्रिंसिपल मैडम है, महोदया है, वो भी उनकी स्कूल में उन्होंने बताया कि रामायण के तत्वों के अनुसार उनके यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है. हमारे साथ आज के रविंद्रन जी हैं जो रामायण के अभ्यासक हैं. इसी के साथ दिलीप गावड़े साहब भी है. तो आज मैं ये चाहता हूँ कि प्रेक्षकों को पूरा आनंद मिले और रामायण की एक अलग तरीके से आप सबको मज़ा मिलने के लिए आप सब यहाँ पर आए. मैं सबका स्वागत करता हूँ और रुकता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत आभार अभिमन्यु काले जी का. मैं निवेदन करूंगा अभिमन्यु जी से कि वे माननीय मंत्री महोदय को इस मौके पर एक बुके भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन भी करें. रामायण का ये महोत्सव अपने आप में इस देश के उस अंतरतम मूल्यों की सुंदर अभिव्यक्ति है और एक बार करतल ध्वनि के साथ उस विभूति का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं जिनकी परिकल्पना इस रूप में साकार हो रही है. मैं इस मौके पर मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मिस्टर स्टीवन फर्नांडिस, हु इज आर्ट डायरेक्टर इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड फ्रॉम फिलीपींस, ऑनरेबल मंत्री जी विल वेलकम हिम विद द बुके एंड शॉल एट दिस मोमेंट. Thank you so much, Mr. Steven Fernandez, for coming with your huge group. Or now I will request Mr. Steven Fernandez, who is felicitate Honorable Minister on behalf of his troop and behalf of Philippines. Mr. Steven will felicitate. Traditional welcome and traditional felicitation on behalf of Philippines he is going to do. Please. So there is a special way to welcome the dignitaries, VIPs, honorable guests in Philippines, and this is a traditional welcome by the group, by Mr. Steven Fernandez, who is a art director of Integrated Performance Arts Guild from Philippines. Thank you so much. And may I now request Mr. Steven, please come here and share his feelings, his emotions, especially which he is having at the moment on behalf of his group. Please, Mr. Steven, आप सबकी तालियों के साथ एक बार हम उनको वेलकम कहना चाहते हैं in this stage. Namaste and
Mabuhay. That's how we say it in the Philippines. Thank you for the invitation. It is really an opportunity to represent 120 million people. That's the Philippines. And to connect with the billion people of India. In our advocacy for world peace and harmony, using the Ramayana as our vehicle. So we all deserve a big hand tonight. That's all. Perhaps of all the Asian countries, we are an aberration, the Philippines, because for so many years, we have not been connected with the mainland, considering our 400 plus years of colonial history. It is only very recently that we have started to look back and to back at our connections, particularly in our island, because I belong to the southern island of Mindanao, where very strong Asian and Southeast Asian traditions still grow. And one of these traditions are portions, I say portions of the Ramayana. We are also privileged because of the invitation extended to us by Mumbai, Ministry of Tourism, for a country that has not been dominating in the lore and the narrative of the Ramayana. But right now, we are rebuilding and reconnecting ourselves, the same kind of Ramayana, the same narrative that will put us back with our ancient linkages to the ancient empires of India. So this is our privilege, this is our opportunity to get back, because it is in the Ramayana where we can dig back to our values of loyalty, our values of filial relationships, our values of trust, but most especially our values of harmony with the universe. Here we are so happy to be invited to this very first Ramayana festival in Mumbai. And we hope that tonight will be a different night because we have started to reassert, well, the Philippine presence in Asia. And of course, to show us that the dominance of India and our relationship with India has always been there. So thank you very much. Thank you, Mr. Stephen Fernandez. Thanks a lot. और देवियों सज्जनों, अब मैं उस विभूति को आमंत्रित करना चाहता हूं जिनकी परिकल्पना का साकार स्वरूप है ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। माननीय पर्यटन मंत्री महाराष्ट्र सरकार जय कुमार रावल जी से निवेदन करूंगा कि इस मौके पर अपने संबोधन के लिए पधारें। नमस्कार। रामायण अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का यह तीसरे दिन में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे एमटीडीसी के एमडी श्री अभिमन्यु जी काड़े, कल ही जिन्होंने अपना पद स्वीकारा और महाराष्ट्र टूरिज़्म का एक नया आयाम टूरिज़्म बोर्ड हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसके नए डायरेक्टर श्री गावड़े जी, हमारे विशेष अतिथि जिनके माध्यम से हमने कई शतकों को जोड़ने की कोशिश की है, श्री स्टीफन फर्नांडिस, आर्ट्स डायरेक्टर, जो आज हमारे बीच परफॉर्मेंस होने वाला है फिलीपींस का, उनके इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड के डायरेक्टर, बॉम्बे के सबसे मशहूर स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती मौली पॉल जी, रामायण के नए पीढ़ी के जानकार जिनसे रामायण हमको समझना चाहिए, ऐसे आनंद नीलकंठन जी, हमारे मित्र पूर्व विधायक श्री भोसले जी, उनके परिवार के साथ एक और कई गणमान्य व्यक्तिगण हैं, भाई और बहनों। आज रामायण अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के तीसरे दिन पे, जिस दिन फिलीपींस उनकी प्रस्तुति अपने सामने देने जा रहा है, महाराष्ट्र पर्यटन की ये कोशिश रही कि जो हमारे देश में
शक्ति के स्थान है, जो हमारी देश की परंपरा है, विरासत है, उसे संभालना, उसे संजोना और आने वाली पीढ़ियों को भी वो देना, ये हमारा कर्तव्य है, ये दायित्व है। और रामायण के इस विशाल कथा में महाराष्ट्र की भी बड़ी अहम भूमिका रही है और केंद्र सरकार के मोदी सर के नेतृत्व में जो इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से स्वदेश दर्शन ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसके बीच जो सर्किट है उसमें एक महाराष्ट्र का भी सर्किट है। विदर्भ में स्थित रामटेक, जहाँ राम ने पन लिया था, वहाँ से लेके नासिक में पंचवटी, रामकुंड, ये सभी स्थान महाराष्ट्र में है। और पूरे विश्व को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि रामायण, जब जब भी रामायण के बारे में सोचोगे तो महाराष्ट्र के बारे में ज़रूर आप लोग सोचो। ये शूर्पणखा का जो आप देखोगे, उस वक्त जो जंगल बताया है, वो जंगल पंचवटी का, हमारे नासिक का है और हम सबको उसके बारे में अभिमान है। कल परसों पहला दिन था, भारतीय ट्रूप ने परफॉर्म किया। कल हमारे कंबोडिया के भाई आए थे, उन्होंने द रॉयल बैलेट ऑफ कंबोडिया ने परफॉर्म किया, वो भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। और आज फिलीपींस हमारे सामने फिलीपींस की टीम प्रस्तुति कर रही है। मैं और हमारी पूरी टीम अचंभे में और सोच रही है कि हज़ारों साल पहले, हज़ारों, 100 भी नहीं, हज़ारों साल पहले रामायण कई देशों में गया, वो देशों ने उनको स्वीकारा और उसको अपने जीने का एक तरीका उन्होंने समझा और उसके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों तक ये उनके देश में चलते आ रहा है। हम लोग करीब 700-800-900 साल पहले विदेशी आक्रमण हुए और हम लोग अपने आप में युद्ध करते रहे। बाद में अंग्रेज़ आए, उनका 200 साल शासन हम पे चला, तो करीब 800-900 साल इसका प्रचार प्रसार हमने नहीं किया। तो ये जो कोई भी फिलीपींस में पहुंचा है, चाहे देश के और दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है, हज़ारों साल पहले पहुंचा है और हज़ारों साल के बाद भी उन्होंने अपनी विरासत को संभाले रखा है। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे आनंद होता है और अभिमान भी होता है कि जो हज़ारों साल पहले हमने विश्व को दिया, उसको संभाल के संजो के रखा और आज हज़ारों साल बाद एक नई दुनिया में, एक मॉडर्न एरा में हम लोग जा रहे, तो फिर हमने उन लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया और आपने क्या सीखा था, अब वो कैसा है, वो जानने की एक कोशिश इसके माध्यम से हो रही है। बॉम्बे स्कॉटिश के प्रिंसिपल यहाँ आए हुए, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। हम ये चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के सभी विद्यार्थी, युवागण, युवतियाँ, इन तक रामायण ये पहुँचे, क्योंकि रामायण कोई स्पेसिफिक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। रामायण भारतीय जीने का तरीका है, जो हम सब लोग मानते, जानते और स्वीकारते। हम लोग की जो सभ्यता है, पूरे विश्व ने उसको माना है। जो विनम्रता है, जो आदर भाव है, all these kinds of things, where do we learn it from? So we learn all these values from Ramayana, which has been taught to us for thousands of years. And I think the world has been following it for years, for thousands of years. And I think it's a great opportunity to reconnect with lost brothers. I must say, the Arch Director Stephen Fernandez is here. I would also give you a heartfelt warm welcome. We are lost brothers because 1,000 years back or couple of thousand years back, this art had gone to your country, or this religion has gone to your country, and you all have saved it, preserved it, treasured it, and now we want to see how it's happening. I think as a world, we all want peace, and in Sanskrit is the mother of all languages, and in Sanskrit we say Vasudeva Kutumbakam. We always feel the world is one family and we should all unite together. But at the same time, what Ramayana also teaches us is very applicable for today's situation at the border, what India is facing, that we should not do any wrong, we should not do any harm, but if somebody troubles you,
somebody does injustice, so you have to pay back in the language they understand. And that's why I think in Ramayana also, when somebody attacked Rama's house, then only Rama took the war to Lanka. That's also what history has taught us. Once again, a very warm welcome to the Philippines team. Thank you so much for coming. And I would also appreciate the effort of my department, my tourism department, our MTDC, which have been striving to let the country and the world know that Maharashtra is so beautiful in so many angles that one should visit Maharashtra. I would also like to extend this opportunity to invite one and all to come see Maharashtra, visit Maharashtra. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. बहुत बहुत आभार माननीय पर्यटन मंत्री महाराष्ट्र सरकार श्री रावल साहब का। कुछ तो बात है देवियों सज्जनों, क्योंकि ये बात हम सबको ही समझने की कोशिश करने की आवश्यकता है कि हजारों साल पुराने समय से दुनिया के तमाम हिस्सों में रामायण अगर इस रूप में हमारे समाज का है और देश का हिस्सा रहा है, दुनिया का हिस्सा रहा है, तो वो कौन से तत्व हैं जो इस रूप में उसको सहेज कर रखने की एक अभिलाषा सभी समाजों में जागती है। और हम फिर अपने आप समझने लग जाते हैं कि रामायण का महत्व हमारे लिए क्या हो सकता है, दुनिया के लिए क्या हो सकता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज रॉयल बैले ऑफ कंबोडिया, हिज हाइनेस द प्रिंस ऑफ कंबोडिया, ही इज़ ऑल्सो सिटिंग हियर वेरी मच विद अस। इसके अलावा इंडोनेशिया के आर्टिस्ट भी आज की शाम यहाँ पर हम सब के साथ हैं। तो आज तीनों देशों के कलाकार और उनके जो मेहमान हैं वो सब एक साथ इस संध्या में हमारे साथ आज की परफॉर्मेंस को देखेंगे। कल इंडोनेशिया की परफॉर्मेंस होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दिलीप जी, हमारे डायरेक्टर टूरिज्म, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ फ़िलहाल के लिए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करें और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे आज की प्रस्तुति की तरफ। दिलीप जी। पिछले 3 दिन से अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव चल रहा है और आज विशेष रूप से फिलीपाइंस देश के जो कलाकार हैं वो आपके सामने रामायण प्रस्तुत करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से हमारे माननीय मंत्री महोदय जी जय कुमार रावल साहब जी आज हाजिर है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जो स्टेज पे जो लोग विशेष अतिथि जो है बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल के जो प्रिंसिपल मौली पॉल जी, उसका भी मैं अब धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ जो खासकर से आनंद नीलकंठ जी है और हमारे महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी साहब अभिमन्यु काले साहब जी है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ख़ास करके आज जो स्टीफन जो फर्नांडिस जी है फिलीपाइन की तरफ से, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दिलीप जी का। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से और सभी डिग्निटरीज से कि वो सामने दर्शकों के बीच में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन उन सभी का, वंदन आप सभी का जो आज की संध्या में यहाँ प्रस्तुति को देखने के लिए पधारे हैं। ये प्रस्तुति जो कि इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड फिलीपींस के कलाकारों के माध्यम से आज की संध्या में आपके सामने यहाँ पर आरंभ होने जा रही है। तो सभी से निवेदन है कि वे सामने आप सबके बीच में अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, आज की प्रस्तुति के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में और आज का जो दल कलाकारों का फिलीपींस से आया हुआ है उनके बारे में संक्षेप में हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड जो आईपैक है फिलीपींस की एक बहुत रिनाउंड, बहुत जानी मानी डांस और ड्रामा की संस्था है, कंपनी है। और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और तब से इस गिल्ड ने 40 से भी अधिक फुल लेंथ प्रोडक्शंस के माध्यम से दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में अपनी प्रस्तुतियां रखी हैं। और इसके माध्यम से चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, स्पेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया के जहां पर अपनी कला और अपनी प्रतिभा और अपनी परंपरा और उसके साथ साथ रामायण की प्रस्तुति भी ये अनेक जगहों पर रख चुके हैं। भारत में इंडिया आसियान समिट हुआ था, पहले दिल्ली में, उसके बाद बेंगलुरु में, और उन दोनों ही आयोजनों में ये गिल्ड के कलाकार आए हुए थे विशेष रूप से, और वहाँ भी उन्होंने रामायण की प्रस्तुति अपनी रखी थी। और इसके अलावा बैंकॉक, और एक ख़ास बात यह है कि इनके अपने ही देश में एक बहुत ही प्रतिष्ठित समारोह होता है, उसमें भी जो कि रामायण महोत्सव के रूप में ही होता है, उसमें भी वे अनेक बार अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं। दरअसल रामायण और विशेष तौर पर जो संस्कृत रामायण है, वाल्मीकि का रामायण है, उस पर आधारित बहुत सारी लोक कथाएँ और लोक गाथाएँ फिलीपींस की संस्कृति में, वहाँ के कल्चर में, वहाँ के अलग अलग आइलैंड्स पर बहुत ही लोकप्रिय हैं और बहुत सदियों से वो प्रचलित हैं वहाँ के लोक जीवन में।
वहाँ मेरा नाव महाराडिया लामाना एक ऐसी ही लोक परंपरा है, लोक गाथा है जो कि फिलीपींस में बहुत ही लोकप्रिय है। और दरअसल उसके बारे में संक्षेप में अगर आपको बताएं तो फिलीपींस में एक एपिक या महाकाव्य है दारांगेन। दारांगेन में मेरा नाव महाराडिया लामाना उसी का महाकाव्य का एक हिस्सा है जिसमें रामायण के बारे में बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है। दारंगाने की कथा जो है और उसके पात्र संस्कृत रामायण से ही लिए गए हैं, ये स्वाभाविक सी बात है, उसी से प्रेरित हैं। और इसलिए इसमें राडिया मांगादिरी जो कि राम का पात्र है, जो कि वहाँ के भाषा में इनको पुकारते हैं राडिया मांगाद्री। इसके अलावा राडिया मांगाद्री के भाई राडिया मांगावारना जो कि लक्ष्मण है, और तुवान पौत्रे मालानो ताहिया जो कि सीता के रूप में वहाँ पर उस लोक गाथा में उनके चरित्र को और उनके पात्र को लोग निभाते हैं और उसके प्रति आस्था भाव रखते हैं। इस महाकाव्य में हनुमान और रामायण के अन्य पात्र भी उपस्थित हैं, लेकिन इस पूरी कथा का जो ताना बाना है वो वहीं के जो प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं फिलीपींस के, उसी ताने बाने में इसको बुना गया है, उसे रचा गया है। और स्थानीय प्रतीकों के माध्यम से ही स्थानीय संगीत, स्थानीय शैली नृत्य की उसी के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जाता है। यही बात इन दोनों देशों के बीच में ख़ास तौर पर भारत और फिलीपींस को एक दूसरे के बहुत करीब लाती है, क्योंकि रामायण जितनी हमारी है, फिलीपींस के लोग भी उतनी ही श्रद्धा भाव से और उतनी ही आस्था के साथ उसे देखते हैं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। और इसीलिए कहते हैं, जब ये बात सच है कि रामायण जितना सार्वभौमिक है, जितना यूनिवर्सल है, उतना ही स्थानीय भी है, और जितना स्थानीय है उतना ही यूनिवर्सल भी है। इसीलिए दुनिया के तमाम हिस्सों में, संस्कृतियों में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड आज जो रामायण पर आधारित प्रस्तुति आपके समक्ष रखने जा रहा है, उसका शीर्षक, उसका टाइटल है सीता द रामायण रिविजिटेड। ये एक फुल लेंथ प्रोडक्शन है जिसकी अवधि 1 घंटे 20 मिनट की है, और इसकी प्रस्तुति में लाइव म्यूजिक के साथ साथ मल्टीमीडिया का इस्तेमाल बहुत ही आकर्षक इसको बनाता है। संक्षेप में उसका क्रम मैं आपको बता देता हूँ, जिस क्रम में ये प्रस्तुति इस मंच पर आरंभ होगी। शुरुआत प्रोलॉग से होती है, और उस प्रोलॉग में जो वहाँ कहते हैं कि तोनोंग मतलब स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं जो आपस में बात कर रही हैं, और वो बात कर रही हैं लंका, जो लंका राज्य है, लंका का जो साम्राज्य है, उसके सौंदर्य का, रावण के उस महल का जिसका अपना भव्यता अपनी है, अपना सौंदर्य है, अपना वैभव है, वो उसके बारे में आपस में चर्चा कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। और उसी बीच में हनुमान से उनका सामना होता है, हनुमान से वाद विवाद होता है, और उस वाद विवाद के बाद जो है वानरों की सेना का दृश्य है दूसरे सीन में, जो कि वानरों की सेना तैयार हो रही है लंका पर आक्रमण के लिए, लंका जाने के लिए तैयार हो रही है। इधर सीता राम को याद करते हुए, उनके स्मृति को याद करते हुए विलाप कर रही हैं। उनके मन में पीड़ा है कि वो राम से इतने समय तक दूर रही हैं, और इस रूप में वहाँ पर एक फ्लैशबैक की शुरुआत होती है। फ्लैशबैक में सीता का हरण, राम का प्रलाप, जो कि सीता के हरण के बाद जब वो नहीं मिलती हैं तब उनका प्रलाप, और उसके बाद हनुमान जब लंका जाते हैं राम का संदेश लेकर सीता के पास, वो दृश्य उसमें। और सीता रावण से कहती हैं कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, ये अनीति है, ये अन्याय है, इसलिए मुझे जाने दो। ये वार्तालाप भी रावण और सीता के बीच का है। लंका राम अपनी सेना के साथ जाते हैं, रावण के साथ युद्ध होता है, और इस युद्ध में राम की विजय होती है, और विजय के बाद वहीं पर सीता की अग्नि परीक्षा का दृश्य भी होता है, क्योंकि राम को ये आभास होता है, ऐसा उन्हें लगता है कि सीता इतने समय तक उनसे दूर रहकर शायद उनके मन में वो स्नेह, वो प्रीति अब ना रह गई हो, और सीता इस बात को साबित करने के लिए कि उनके मन में अभी भी वही गहरी प्रीति है राम के प्रति जो पहले थी, वो अग्नि परीक्षा अपने आप स्वतः देती हैं। तो ये पूरा दृश्य, ये पूरा भाव दृश्य है इस प्रस्तुति का जो आप देखेंगे। कथा हमारी परिचित है, हमारे संस्कारों और हमारे अपने आत्मा में बसती है, इसलिए आप उसे बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। प्रतीक, गीत, संगीत, शैली अलग है, लेकिन भाव एक ही है जो भारत की भूमि से उपजा है। तो एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए आज के कलाकारों का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें, और मैं निवेदन करूं आप सबकी तरफ से कि आज की प्रस्तुति का ये शुभारंभ करें इस मंच पर। फिलीपींस के कलाकारों की प्रस्तुति का शुभारंभ हो, उस बीच एक सूचना हम आपको ये भी देना चाहेंगे, और हमें बहुत खुशी होती है कि हमने इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी इनवाइट किया है, और उनके जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं या इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो भी आज की इस शाम में हम सब के बीच इस प्रस्तुति को देखने के लिए पधार रहे हैं। तो ऐसे 50 बच्चे जो एसोसिएशन की तरफ से हैं वो भी इस फेस्टिवल को अटेंड करेंगे, उनका भी हम खास तौर पर आज की संध्या में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं।
Malihim kong minamanmanan, galaw ng mga kalaban, pero bigla na napansin sa herong dumating. Nagibangan niyo ako, pero hindi sila naguyo. Tuso man naman sing, naulit na parusahan pa rin. Kung hindi dahil sa aking mahika, ngayon siguro na sumunggoy na. Sa mga Iyakin, walang kalabang paluluskutin. Abot tanaw ang layunin, sumpa natin buksain. Langka sasalakain, langka pupuksain. Langka sasalakain, langka pupuksain. Kahari nilawana, kahari ang masama. Langka sa dulo ng mundo, unti-unting guguho. Langka sasalakain, langka pupuksain. Langka sasalakain, langka pupuksain. Walang hadlang, bundok o dagat man, mula sa pagpunyaging pinagkaisaan. Walang hawak siyang pupulbusin, sinusubukan ang gawin natin. Mula noon, pamantin, lawanan na ang alingurahim. Lakas ko'y matitikman, sa Diyos ito'y biniyayaan. Walang pag-alinlangan, pagtanggol ang kabutihan. Dahan-dahan kakamping radya, kaunting lamig ng ulo, tamang pag-isip pairalin, kaligtasan ang uunahin. Naunawaan ko bukso ng galit mo. 12 buwang kang nagdusa sa paghiwalay sa suyong asawa. Ilang oras na lang, wag nang mainip. Mapawi na pitaya ng iyong mga braso. Mailigtas mo na, sinta mong sita. 13 taon, inaligata. Ilang
buwan din kaming naghahanap isang kulungang tago-sala. Salamat sa'yo, Sugriva, sa tulong at pag-uunawa tutubusin pinakamamahal kong sita. Lubos ang aming pasalamat! Langka nilawana, sabay nating lusubin. Langka nilawana, kahariang sira. Ilo na isla, buksain natin ito. Walang hahalang, dagat bundok man. Mula sa pinagulan, tuloy ang bakbakan. Tuloy ang bakbakan. और इस प्रकार राम सुग्रीव और हनुमान के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करते हैं। Mabawi ang sintang Sita. Pinaghandaan sa napakahabang panahon ang pagligtas sa kanya matapos siyang mamataan sa Langka. Sinukat ng pag-iikot ng panahon. Ang tagal na paghihiwalay. Ang punong nagmula sa punla, nagbunga ng prutas. Hinog na nalaglag sa lupa, muling simula sa pula, puno ng tamis ng bunga. Rama, nasaan ka na dito sa halaman na? Araw-araw pa na nabigay lumalala. Muling nagbungang punla, sinusukat ang aking pagkabalisa. Rama, nasaan ka na? Labintatlong taon akong kasama. Masunuri na asawa, sunsunuran, kapiyakan. Anino kakay moraha, akong anak ng hanaka. Handog alay sa paligsahan, gantimpala sa husay mo. Walang hanggang katapatan sa langit. Sinumpaan. Rama, nasaan ka na dito sa halaman na? Araw-araw pa na nabigay lumalala. Muling
Nagmula ka sa angka ng mga Tagalangka. Alam mo yan, Keke. Mahigpit kang nakatali sa mga parente mo. Matagal na nating kaaway ang ama ni Rama. Kapag hindi mo siya napapatalsik, tiyak, si Rama na ang susunod na magiging sultan. Gawin mo na.
Sa Manila ko siya nakita, bugtong anak ni Hanaka. Hinamon ako, tinanggap ko pagkakataong bihira ang pagwagi sa kanya. Langit nilikha, sida sinta uliran banal masunuri marikit pa sa maganda, wala ka nang hisilingin iba. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Walang hanggang kalagahan, pagkataong kakaiba, kinainggitang wagas, san ka mamamasita? Nasaan ka na? Pabalik-balik pa rin ang mga bangungot. Ba't ba di ko maiwaksi ang katauhan niya sa kamalayan ko? Balisa ka, kapatid. Mabilis ang mga pangyayari. Ilang araw na lang masasakop na natin ang langka. Lawana, Maghaharapan na kayo. yan ang pinakahihintay kong hamon. Tutubusin na natin si At masasanla ang buhay ni Lawana. Isang maluwalhating araw para kay Ama. Isang masamang araw para kay Lawana.
Hinding-hindi ko mapapatawad yun. Pati ang pinakamamahal kong Sita. Hindi. Malapit na. Nagtiwala kasi tayo eh. Akala natin tapat ang inainahan natin si KK. Hindi ko nga kalaing magagawa yan ni KK. Sa kadugo lang natin tayo magtitiwala. Nandirito ako upang tiyaking ligtas ka, kapatid. Ito ang huling habili ni Ama. Salamat, kapatid. Tinitiyak ko lang kung saan kayo tinago. Utos ito ni Rama. Lagi siyang nag-aalala. Maayos ang pagtrato nila sa akin. Makikita mo naman. Nag-aalala siya at baka nagalaw ka. Hindi mangyayari yun. Matagal kang hinanap, Sita. Kaya dinadasal ko rin ng maingat ninyong pagdating, Hanuman. Mapanganib. Lalong-lalo na't nasa gitna ng dagat ang isla. Hanuman, paano kayong tatawid? Lilipad. Gamit ang mahika namin. Hindi nila napansin ang pagpasok ko. Pero mapanganib, malaki ang tiwala nila sa kanilang sarili na matataob nila kayo. Marahas si Lawana. Hindi, Sita, makinig ka. Sita, makinig ka. May plano kami. Dito ka mamamalagi. Nahati sa 3 grupo ang pangkat. Ang pangunahing grupo sa Hilaga papasok. Maingat kaming papasok sa likod para hindi mahalata. Diretso sa'yo. Wala na bang ibang paraan bukod sa madugong paglalaban? Mayabang si Lawana. Hindi yun nakukuha sa mabuting usapan. Kung may iba lang sanang paraan, alang-alang na rin sa mga magbubuwis ng buhay. Iisa lamang ang paraan. Tandaan mo, sa likod kami dadaan. Mabalaan sana si Rama! Nakikinig-kinit ako, kapansanan at dugo. Magsasagupaan dalawang ko, walang paghupa hanggang sa huling tao. Maari bang iwasan pagdanak ng kamatayan? Ligalig na babarating, ramat at sama na sa kapahamakan na taya. Maari bang iwasan pagdanak ng kamatayan? Tiyak maraming madadamay, Rama, bawat galaw at pantay, kailangang mapagsabihan. May kausap ka? Nag-aalala lang. Ligtas ka rito. Lawana, makakalaya pa ba ako? Malaya ka naman. Hindi, mababalik sa Ayodha? Hindi mo gusto rito? Lahat ay binibigay para sa kasiyahan mo. Kasaganahan, katahimikan. At ang kagandahan ng halamanan. Wala ni isa sa bayan ang makakukumpara nito. Salamat. Salamat sa pag-aalaga niyo. Tungkulin ko. Napapaligiran ng isla ng dagat. Oo, malawak. Malaya. Dagat at dagat sa maaabot tanaw. Pero Lawana, isa pa rin akong bilanggo. Masasanay ka rin. Ligalig na si Rama. Sadyang ipinanganak at iginuhit kami na magkaiba ang pangkat. Karma. Lawana, kung ako'y ipalalaya mo, maaari kong itigil ang karahasan. Magkaiba ang langit at imperno, Sita. Sa pagkakataong ito, nag-iipon na sila ng lakas. Nasa tapat ng isla, nakipag-ani puwersa sa hukbo ng mga unggoy. Sugriva, hari nila na walang humpay na agawin ng langka. Karapat dapat silang magsanib ng mga taksil. Pero, hindi ako natatakot. Lumaki kami sa digma. Lubog kami sa pagigera. Sa kapangyarihan ko, walang makatataob. Ang mga tulad ni Sugriva, napakalaling sugpuin.
Hindi. Hindi ka dapat matakot, Sita. Tinitiyak yan ng mga bantay mo, ang mga tonong. Oh, ligtas ka. Nasa akin ang buhay mo. Tadhana'y muling mabubuo. Parang nagkita na kami sa ibang buhay pa. Natagpuan ko na ba si Lawana? Pambihira ang pagkukup niya, pag-aalaga at pagbibigay bahala. May kahulugan sa pag-aaruga. Bihag ako, hindi bisita. Ano itong nararamdaman ko? Panganib tiyak ay malayo. Siguradong matiwasay, sagana ang buhay, lubos-lubos ang biyaya. Ako ba'y bilanggo nga kaya? At akala mong hindi ka madidiskubre. Minamanmanan mo kami. Bungkalin mo man, wala kang makukuha. Walang magsasaklolo sa'yo dito. Espiya. Nakakatakot. Hambog. At makunat ang bungo. Ano bang laman yan? Anong laman yan? Unggoy man sa inyong paningin. Ngunit may dangal kaming kimkim. Di tulad sa mga demonyong katulad nyo. Hiyang-hiya naman ako sa lakas ng loob mong unggoy ka. Nagawa mo pang lait-laitin ang mga bumibihag sa'yo. Hindi mo ba alam na sa isang angat ng hinliliit ko, iikot yang lupot mong unggoy ka? Iutos mo! Iutos mo! Aba! Naibang ang unggoy. Matapang o nadagtag tapang-tapangan? May bahid ba ng kapangyarihan o nag-aangas-angasan? O di kaya ay nasobrahan sa lakatan? Hindi ka makikinabang sa daliang kamatayan. Ipapatikim ko sa iyo ang matinding pagpaparusa bago kita patayin. Sindi alang sulo! Sunugin siya! Sandali. Sa kagandahang loob ko, handog ang isang pagbibigay galang ng isang marangal na mandirigma sa isang kasing marangal na unggoy na katulad mo. Hindi kita papatayin. Oo. Sa utos ko, ipauuwi kita sa mga kalahi mo upang ibalita mo sa kanila na ang mga Tagalangka ay tunay na mababait. Ang hari nilang si Lawana na akala ng marami ay marahas at mamamatay tao o mamamatay unggoy ay talaga naman pala isang mabuti at maunawaing pinuno, maginoo kahit sa isang unggoy na katulad mo. Pero, kailangan may bakas. Kaunti lang. Palatandaan sa pagiging isang malugod na panauhin sa ingranding kaharian ng langka. Sunugin ang buntot niya, tapos pakawalan!
Ganon din ang itsura ng ayodha nung ito'y sinalakay ng mga tauhan ni Kekei. Ang pangatlong asawa ng ama ni Rama at Laksamana. Wala kaming nagawa kundi ang lumikas. Ang tumakas sa mapang-aping pamahalaan ng taksil na reyna. Naganap ito 1 taon na ang lumipas. Hindi ako mortal na basta lamang mababawian ang buhay. Ako'y anak ng hari ng hangin. Kaya kapangyarihan ko'y mahiwaga rin. Sa aking pagiging mausisa, natuklasan ko ang daan ng tatagos patungong langka. Sa ibabaw ng dagat, sa likod ng mga ulap, panakaw kaming makakapasok sa bayan ni Lawana. Sakit kay Hanuman ay nangangahulugang atake sa atin, Sugriva. Hindi basta-basta nasasaktan si Hanuman. May lahing Diyos yan. Napakalaking insulto. Pinabalik siya. May ibig sabihin ng paglaya sa Agahan kanya. natin ang pagsalakay ngayon na. Nainahon, Raja Rama. Walang mararating ang init ng ulo. Hindi na nila tayo nirespeto. Yan ang gusto nilang mangyari. Ang maputok ang butsi mo at mag-init ang punong tenga. At habang nilalamon ka ng sarili mo'y humahalakhak ang ating mga kalaban. Nais nilang guluhin ang ating kalagayan. At mukhang hinahayaan mo silang magtagumpay. Ang aking sisita, nasa mabuti kaya siya? Paano nga ba? Puri ba'y nilabag? Napagdamutan ba ng habag ang aking nililiyak? Ligalig ang aking kalooban, palaisipan ang iyong kalagayan. 12 buwan kay Lawana na iwan sa isang hayok sa laman. Ano ang aking aasahan? Walang alinlangan, durugin ang kalaban. Wasakin ang paniniil, banta ay itigil. Sita ko'y bawiin at pagbayarin ang salarin. Napagdamutan ba ng habag ang aking nililiyak? Nakatakda sa kaugalian, mabubura lamang sa kamatayan. Kapangyariang kinakamkam, mamasapatin niyo pang mamatay. Kaysa galit ko ay salubungin.
Ibalik mo si Sita. Maraming madadamay. Hingan mo ko ng iba. Walang pakialam ang marami. Dapat sila sa pinag-uwayan ninyo. Sinusubukan nila ang aking lakas. Wala naman talagang babangga sa'yo. Buo ang aking kapangyarihan kapag napataob ko si Rama at si Sugriva. Si Sita ang pakay ni Rama. Hindi ko siya ibibigay. Nabighani ka. Hindi ako hayok. Huwag kang ganyan, kapatid. Doble ang edad ko sa edad niya. Matagal ka na walang asawa. Pumasok pa sa isip mo na palitan si Mandaduri. Hindi. Mananatili siya dito. Bata pa lang siya noon. Gusto ko na siyang alagaan. 12 buwan, unti-unti siyang napalapit sa'yo. Nawala ang takot. Mula nung umurong tayo sa ayodha, wala na akong ibang mithi. Nakabawi ka na. Iba na ngayon. Tingnan mo. Sumusulong! Sige! Atake kayo! Tingnan natin kung masusukat ninyo ang aking gahong! May muling buhay na mawawala. Hindi na ngayon. Pangangalagaan ko siya. Sa pangalawang pangkat ka, umangkas kay Hanuman. Sa likod kayo lulusob sa salakayan ng halamanan. Lalansin sa harapan habang maingat kayong pumapasok kasamang mga unggoy. At matapos mailigtas si Sita, Umiskera na kayo. Tapos kami nang bahalang sumalubong sa mga kawal. gusto kong sumama sa labanan, Sita ang Sugriva. ating pakay. Tiyakin mo na makakaligtas siya sa langka. Lalaban ako. Sita, Silaksamana ng bahalang mag-alaga sa kanya. baka sumabit ka. Kumpiyansa ako, Sugriva. Kailangan kong humarap kay Lawana. Hinahon, Raja Rama. Baka mapahamak ka. Walang makakagumit ang ulo. Kailangan ko ang buhay ni Lawana. Maniningil din si Pwes Lawana. magbabayaran kami. Isusukli ko sa kanya dugo. Dahil ako ang tunay na papatay. Paparating na ang iyong asawa. Pinamumunuan niya ang isang malaking hukbo. Pigilin na ang pagdanat. Sila ang sumusulong. Nanatili kaming tahimik. Hindi, maaaring itigil ang dahas. Hindi, mukhang nakapagpasya na si Rama. Nais niyang salakayin ang langka at nais kanyang iligtas. Lawana ako. Hindi.
Hindi mapipigil si Rama hanggat hindi kanya nakukuha. Ako ang makapipigil ng pagdanak ng dugo. Ikaw nga. Ikaw nga. Pinalalaya na kita. Oo. Maaari ka nang umalis. Ihahatid ka ng mga tonong sa dulo ng islat. Ikaw nang bahalang kumimbinsi kay Rama na pigilan itong pagsalakay. Sige na, lumikas ka na. Sige na, malaya ka na. Akala ko ba pakawalan mo siya? Hindi siya aalis. Hindi niya mapipigilan si Rama. Lingid sa pagkatao mo. Sino bang pain? Wala kang tiwala sa akin, kapatid. Ano bang totoo? Mapipigil ba ni Sita ang banta? Hindi niya mapipigilan si Rama. Natitiyak ako. Hindi mapipigilan yon. Kaya pagkakawalan ko si Sita, pero hindi ibig sabihin ay pinipigilan ko ang pagpuksa. Idadamay mo ang walang sala. Ipipiit o ipalalaya man. Lulusob at lulusob pa rin si Rama. Kilala ko siya. Pagbawi ng karangalan, kapatid, ito ang naguudyok sa kanya mga walang ingat na galaw. Hindi siya mapalagay. Nais niyang gumanti. 1 taon, nawala si Sita sa kanya, nakulong sa akin. Unti-unti siyang nawawala ng tiwala kay Sita. Nais niyang gumanti. Kaya hindi mapipigilan ang paglanak at pagdalaw ni kamatayan. Pero mabibigo siya. Dahilan ako rin ang paraan napipintong dakilang digmaan. Alam ko, maaari ko itong pigilan. Malaya akong tatakas o hindi, nasa sa akin ito. Meron bang kakambal na lihim? Ang pagpapalaya sa akin pampaluba, sa kuta maaaring umiskapo, di kailangan ng saklolo. Ngunit ano ito? Nagdadalawang isip ako. Mananatili ba o tatakbo? Masusukat nga ang tindi ng kanyang pananampalataya. Dito sa langka ipinunla, sa ating lupa, makukuha ang bunga. Labing 2 buwan layaw kaniyang naranasan. Buhay reyna dito tiniyak sa uri niya lamang nararapat. Pwede ka nang umalis sa kapakanan mo, umalis sa paghaharap ng inaabangan, pagsasagupaan, pagbabatayan. Isa lamang aking pakiusap, paglaya mo'y sarili mong paghanap. Huwag akalain, handa ng pagsusuko, magkusay kagandang loob sa'yo. Nang
Nasa sayo ang pasya. Malis o manatili dito. Ngunit si Rama, kailangan siyang mabalaan. Kung hindi, ay silang dalawa dito ay magsasalpukan. Dito'y aabangan, matatagpuan ng tiyak na kamatayan. Nasa sayo ang kapasyahan. Ano pa man, pagdanak, hindi maiwasan. Susugod ng susugod man ang kalaban. Bangis ko'y kanilang abutan. Walang katapat silawanan sa lakas niyan. Nag-iisa, ano ang hibabantay ni Sige. Rama? Sugod kayo ng sugod! Kailangan Ako ang sadya ninyo. Sugod kayo ng sugod! Tingnan natin kung makakaya ninyo! Kung nais mong lumano, Nakarili-mari ito'y nasa isipin. sa iyo. Hindi naman Karahasan babago hanggang man paparating. naamoy ko. Nakikiusap ako, nananalangin. Mga pinyo'y kalapit naibit ako sa gitna. Ako'y napapagitan sa dalawang bundok na nagbabanggaan. Di ko magawang tumakas kung sa dahas magwawakas. Dito ko abangan si Rama. Kailangan na ako'y magmamakawa. Ayaw mong umalis. Nagmamakaawa ako, dakilang lawana. Paparating na ang mga kalaban. Madadanak ang dugo. Yak ako madadamay ka. Haring lawana, pakiusap. Sasaksihan ko ang buong karahasan Hindi. hanggang sa magwawakas nito. Ihatid ka ng mga tonong sa utos ko para sa Nasa iyong kabilang kapakanan. pangkat ng asawa ko. Wala akong kapangyarihan o pampigilin ng pagdawit, Sita. Lang ka lamang ang sumasahod sa kanilang kawalang isip. Kung sa ganon, sasaksihan ko ang buong karahasan. Hindi ako aalis. Pinapalaya ako. Tinatanggihan ko. Isip ko ba'y matino? Sa lagimsin, unti-unting nabubuo. Sanggol ka pa, inarugan na kita. Taon kang nawala, nawalay sa tunay mong ama. Sa tudling kunuway, ikaw ay natuklasan. Sa araro hinukay una mong kanlungan. Pakiramdam ko'y hilot lito ang bumibihag sa akin. Minsan ko nang nasalubong.
Taas ang ligalig, pinakamumuhing Diyos sarata. Walang upay, nakipagdigma, halot sana ipinamana sa tagal ng panahon. Mga nakangangang sugat, imposible nang may tikom. Hindi ng pasakit, hindi na mapahilom. Walang pumipigil, dalawang pangkat lumusulob, lumilisan papasakit. Walang pumipigil sa kamatayan. Subalit maaring iwaksi kamalasan, lulong sa panganib, ipatigil sandali. Di ako mapakali, may bumabagabag sa dibdib. Naging bahagi ako ni Lawana sa nakalipas na panahon, sa isang tagkoron. Siguraduhin walang kalabang bubuhayin bawat sulok ng isla. Walang buhay na matitira. Langka sasalakay, langka pupuksain. Langka sasalakay, langka pupuksain. Pagkasaray ni Lawana, tigit ng pagkakasala. Langka ay lusubin, linisin na isayin. Langka sasalakay, langka pupuksain. Langka sasalakay, langka pupuksain. Walang pipigil pa, tagumpay aagawin. Langka ang kinit mo, tawag natin maliliparin. Walang hawak ko siyang pupulbusin, sinusubukan ang gahong natin. Mula noon, pamandin, lawana na ang alimurahin. Lakas ko'y matitikman, sa Diyos ito'y biniyayaan. Walang pag-alinlangan, pagtanggol ang kabutihan. Raja Ramati, basta-basta si Lawana gawnya'y umaapaw, lumalabis, umiipaw. Dahan-dahan, timpin, huwag sa paggalit, mahumpay. Malapit na kayong magkatapos, huwag sayangin sa panalos-dalos. Sasalakay na ang tawayanan ko. Isa-isip mabuti ang plinano. Sinta mong sita, mailigtas na. Isang taong magdurusa, mabubura. Wala, sandali na lamang, papalapit sa isang kulungan. Sa pagsanib, dato, sugriba, sukli, sa tulong nung una. Pari sa tulong mo, sanib na ito Inyong tutubusin ang tulong ko. Langka ni Lawana, sabay nating lusubin. Langka kay Rama, aangkinin. Langka ni Lawana, kahariang sira. isang lino, sain natin ito. Walang
Handang-handa nang sumulong si Rama sa tulong ni Sugriva. Pagkakataon lamang ang pagsanib nila dahil sa tulong na ipinabot ni Rama sa paglupig sa masamang kapatid ni Sugriva. Walang singtamis ang tagumpay ng paghihiganti. Lagi akong nasa tabi mo, kapatid. Mahaba-haba rin ang pagtsatsaga natin. Simula nang pinalayas tayo sa gubat. Maraming salamat sa pakikiramay. Matapos si Lawana, si Kikei naman. Babalikan natin ang traidor. Ngayon na triple ang lakas ng ating hukbo. Mamarcha tayong buo ang loob. Tiyak ang tagumpay. Sa labas pa ng ayodha, iwawagayway na natin ang pagwawagi. Tapusin muna natin ito, kapatid. Mababawi na natin ang katasilan. Ang paghihirap sa gubat. Hindi ko na malaya ng mga kilos nila sa likod natin. Magpinsan si Kekei at si Lawana. At namatay si Ama ng masama ang loob. Nalusutan tayo. Sino naman mag-aakalang ang mismong tiyahin ko pa ang magtratraidor sa akin? Napakataas ng paggalang ko kay Kekei. Kinasal pa kami ni Tita sa harap ni Raja Hanaka. Kinakapatid ni Raja Lawana ang biyanan mo. Papasok tayo sa ayodha na buong taas ang noo. Kukunin muli natin ang bansang pinaunlad ni Ama. Uunlad muli ang ayodha. Dahil ako ang tunay na magmamana. Nasa dulo si Sita ng halamanan. Sa timog ng isla. Mag-ingat tayo. Panahon na. Ah! Isang araw mula sa ibayo, paparating na ang mga kalaban. Desisyon mo. Tuloy-tuloy na. Hindi umalis si Sita. Alam ko, Nakapagtataka. wala namang pumipilit sa kanya. Alam niyang maililigtas niya si Rama. Kung mananatili sa dito. Paano? Babalaan niya. Paano? Ni isang hakbang nga, hindi makasasayad sa lupa natin ng paa ng mga demonyong yon. Dahil sa dagat pa lang, uubusin ko na ang kanilang lahi. Naniniwala siyang matitigil ang pagdanak ng dugo. Napaka-inosente. Lumaki kasi sa kamangmangan. Walang alam sa tunay na mundo. Walang hupang bangayan yun ni Dasarata. Hindi ko maisip kung gaano katindi ang puot niyo sa isa siya. Magkamag-anak naman tayo ni Kiki. Inatay niya ang kapatid natin. Aksidente! Aksidente, walang saksi. Kapatid natin, asawa't anak mo, nadamay. Nasa kabilang bayan ka nung naganap yung madugong inkwentro sa Bumbaran. Mabilis akong binabalik. Alalayan kayo. Pero hindi mo pa rin nailigtas si Mandadori. Nadaling mag-ina. Nabuhay ang anak ko. Kailangan mong lumikas. Ngayon na. Babalaan ko si Rama. Wala nang oras. Magpapatayan ng dalawa. Saka ko na sasabihin sa'yo. Ang ano? Sumama ka sa Hindi. akin. Hindi ako aalis. Sasama ka sa Kailangan akin. mo muna akong patayin para maisama mo. Paparating na dito si Rama. Alam niya kung saan ka itinago. Kapag hindi ka niya dito makikita, mag-aatubiling
Lulusob siya sa palasyo ni Lawana. Hahanapin ka muna. Alam ko. Kaya magpapagitna ako sa pagitan ng dalawang pangkat. Kung yan lamang ang paraan para matigil ko ang karahasan. Halika na. Nagbago ang ihip ng hangin. Kaligtasan mo muna. Saka na pagpapaliwanag. Papaliwanag! May dahilan si Lawana kung bakit manatili ka dito. Bihag ako. Hindi ganyan kasimple. Naranasan mo ba ang kalupitan ng pagiging bihag? Hindi ako isang pangkaraniwang bihag. Hindi sa inakala mo. Karapat-dapat na ganito ang pangangalaga sa akin bilang isang rani dahil hindi pangkaraniwan ang pagkatao ko. Hindi yan ang Mananatili dahilan ako nung dito. nangkin ka kay Hanaka ni Rama sa kasal. Ang nagtayong ina-inahan mo. Si Kay. Yung traidorang yon. Sana nagpasimuno ng rebelyon sa Ayodha. Pinsan siya ni Hanaka ang nagtayong ama mo. Oh, ama ko si Hanaka, ano pa? Pinsan namin ang kinakapatid na si Lawana si Kay. Siya nag-aalaga sa'yo bago lumating si Rama. Dahil namatay ang ina ko, alam ko yon. Namatay ang ina mong si Mandadori dahil sa pagsalakay ni Dasarata. Dulo na dalawang mortal na magkalaban. Hindi, wala akong alala. Wala akong alaala kay Mandadori. Nasa kabilang bayan ako nang sinalakay kami. Dali-dali akong pinatawag upang tumulong. Pero huli na ang lahat. Naguguluhan ako. Walang alitan sa pagitan ni Dasarata Wala. at Hanaka. Kaya binigay ka kay Hanaka upang alagaan at mabuhay. Asawa ni Lawana si Mandaduri. Ina mo si Mandaduri. Ang nagtayong ama-amahan mo. Si Hanaka.
kailangang patunayan. Agam-agam ko'y mabawasan. Usilaka't malinis, walang katiting na bahid ng dungis. Tumawid ka sa silong kung walang sala, aboy mawawala ng bisa. Maraming saksi ang nagsasabi na si Sita ay nakaligtas mula sa pag-alab ng apoy. Ni Munting Galos, wala siyang natamo. Ngunit, marami din ang nagsasabi na si Sita ay hindi na lumitaw matapos ang apoy. Ang naiwang alaala na lamang ay isang singsing na nagpapakita at nagpapatunay na si Sita hanggang sa huli naging tapat kay Rama.
सीता रामायण रिविजिटेड। इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड फिलीपींस की ये परफॉर्मेंस आज की शाम के हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की ये सुंदर मार्मिक प्रभावशाली प्रस्तुति। And now Mr. Steven Fernandez, the art director of the Integrated Performing Arts Guild Philippines. मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से, जय कुमार रावल जी से, कि वो मंच पर आए। अभिमन्यु काले जी उन्हें लेकर मंच पर आएंगे, हमारे एमडी साहब, ताकि मंच पर इन कलाकारों के साथ ये आज की संध्या के जो प्रस्तुति के कलाकार फिलीपींस से आए हैं उनके साथ सबका एक ग्रुप फोटोग्राफ हो सके। और आप जितनी भी श्रद्धा से, प्रेम से, स्नेह से तालियां बजा सकते हैं इनके लिए ज़रूर बजाएं, क्योंकि भारत की संस्कृति की आत्मा को सहेज कर इन्होंने रखा है अपने देश में, अपने प्रदेश में और अपने क्षेत्र में, और इतने सुंदर मार्मिक ढंग से। तो इन सब कलाकारों के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी बधाई भी। और ये अवसर इतना अनूठा है जब हम अपने देश की संस्कृति के आत्मा रामायण की ये सुंदर मार्मिक प्रस्तुति किसी और देश के कलाकारों के माध्यम से हम देखते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में 300 से भी ज़्यादा वर्जन्स हैं रामायण के, और उनके अनुवाद तो हज़ारों हैं, लेकिन वर्जन्स अलग अलग लगभग 300 से ज़्यादा हैं। और इसी तरह से फिलीपींस में भी अलग अलग क्षेत्रों में, और साउदर्न फिलीपींस से ये कलाकारों का दल आया जिन्होंने आपके सामने ये प्रस्तुति रखी। इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड फिलीपींस मिस्टर स्टीवन फर्नांडीज के आर्ट डायरेक्शन में इन कलाकारों ने, जिन्होंने दुनिया भर में बहुत सारे देशों में अपनी प्रस्तुतियां रखी हैं, आज की संध्या में हमारे इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल की आज की इस तीसरी संध्या की प्रस्तुति के रूप में इसे हमने आपके सामने रखा है। हमारे एमडी साहब अभिमन्यु काले जी इस अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे। Hello friends, I would like to point out one more thing. You must have seen the body language of all the performers. We are really very much impressed by their body language. Even we can't understand their language, but we understood what they have performed. And and their emotions. The emotions were expressed through their bodies, their actions. And the music was very, very superb. And it was matching with their emotions. So I congratulate all the musicians also and our director. So let us clap, give them a big hand. Thank you so much, ma'am. और इस बीच आपको हम ये भी बता दें कि इतना भव्य सेट जिसकी चर्चा हर रोज आप सब करते हैं, और ये भव्यता सेट की जो अपने आप में इंटरनेशनल सिंबल्स को, बहुत सारे सिंबल्स को अपने इस सेट में समाहित किया गया है, क्रिएट किया गया है। ये पूरा एम्बियंस, पूरा सेट, पूरा डिज़ाइन, ये सब कुछ इस बात की कोशिश है कि दुनिया के अलग अलग देशों में, संस्कृतियों में रामायण और राम की कथा जिस रूप में उपस्थित है उसका कुछ हिस्सा, कुछ अंश, कुछ रंग, कुछ स्वरूप आपके सामने हम जरूर प्रस्तुत कर सकें। और इसलिए ये पहला रामायण फेस्टिवल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो महाराष्ट्र सरकार के मार्गदर्शन में पर्यटन मंत्रालय और एमटीडीसी ने मिलकर आपके लिए किया है। और ये शुरुआत, ये पहला आयोजन, इसके बाद एक एक करके हर साल अलग अलग देशों की प्रस्तुतियों को देखने को हम सबको मिलेगा। हमारे सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन के 50 बच्चे जो खास तौर पर आज की शाम यहाँ इस मौके पर आज की परफॉर्मेंस को देखने आए हैं, हमें बहुत खुशी है कि वो इस मौके पर हम सबके साथ हैं। और उन बच्चों के चेहरे की खुशी, उनकी उत्सुकता, उनका उल्लास देखकर हमें लगता है कि उनके आने से इस कार्यक्रम को और भी गरिमा मिली है, इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ी है। और हमें खुशी है कि हम उनके जीवन में इस तरह से इतने सुंदर ढंग से कुछ मूल्य और कुछ स्वरूप प्रस्तुत कर सके। तो सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन के सभी टीम को भी हम इस मौके पर खास तौर पर थैंक्स कहना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम खास तौर पर आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं
फिलीपींस से आए इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड की पूरी टीम का, जिन्होंने आज के इस मौके पर इतनी सुंदर, इतनी मार्मिक, भावपूर्ण प्रस्तुति आपके सामने रखी है। और वाकई कला भाषा की मोहताज नहीं है, कला अपने आप में एक उसकी भाषा है, और वो कला आपने उनके अभिनय में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके एक्सप्रेशंस में और उनके अभिनय की क्षमता में अच्छी तरह से देखा है, सराहा है। तो आज इन सब के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, गुड विशेस, सबके लिए बहुत सारा आभार, और आप सबका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। महाराष्ट्र पर्यटन और MTDC महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। Splendid performance. It was a lovely performance. I had heard about Indonesian Ramlila, but this was the first time that I heard about Ramlila in Philippines, and I was really impressed. I like the Ram the most. Another country coming to our country and performing something like this, it's a merger of two cultures, so it was very good. It was fascinating. They had a different variant of their own, so it was nice to see another way of the story. Fantastic, बहुत मजा आया। Ramayana International Festival, hip hip hooray!